ताले मैं ग्रीन रेवोल्यूशन देखी देवा जो तीनटा रेवोल्यूशन तुमर अच्छी आज ग्रीन रेवोल्यूशन आगे देखी देवा तो तुमर सिलेबस रे जदी देखिबो कि ग्रीन रेवोल्यूशन एंड तार इंपैक्ट कोन प्लस जाम देखे पॉजिटिव आउ नेगेटिव इंपैक्ट बोथ देखिया पड़ियो वॉइस आपसे समझता हूँ। ऑडिबल होचे ना समस्तଙ୍କୁ कौन आइगला तो केही गोटे कहिदिए ऑडिबल होनी होचे कि नहीं गोटे कहिदिए किछि वॉइस इज कमिंग ओके फाइन ठीक अछि डन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो सिलेबस रे कहूची कि तुमरो ग्रीन रेवोल्यूशन तारो एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लिकेशन सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लिकेशन तो जति हम देखिबा दैट मींस हमर तीटा कंपोनेंट अछि एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन रो बैकग्राउंड जानिबा तार सोशल इंपैक्ट कोन पड़ला एंड इकोनॉमिकल इम्प्लिकेशन कोन पड़ला तो ako हमको देखिया पड़िबो। सो लेट्स बिगिन विथ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू कोन ग्रीन रेवोल्यूशन जति हम देखिबा कि एग्जैक्टली मो तुमको टिके एठी बैकग्राउंड कहते ग्रीन रेवोल्यूशन काहे की दरकार पड़ला इंडिया को ना इट वाज आफ्टर द इंडिपेंडेंस जति हम देखिबा so since independence हम कहबा और आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 1947 ପରେ इंडिया वाज फेसिंग सीवियर फूड क्राइसिस इंडिया पाखरे सबुठु प्रॉब्लम थिला कि फूड क्राइसिस थिला एंड वी वर फूड डिपेंड इंडिपेंडेंट तो नथलु डिपेंडेंट कंट्री थलु ऑन यूएसए रशिया एंड अदर्स एमएन को ऊपर में कोन डिपेंडेंट थिलु है फूड डिपेंडेंट थिलु एंड जहार कि हमको देखिया बोला कि दे स्टार्टेड प्लेइंग लाइक जियोपॉलिटिक्स विथ द फूड जाको मु कहबी जियोपॉलिटिक्स विथ फूड है ना दैट मींस इंडिया ऊपर जेमती सैंक्शन लगेबा इंडिया को प्रेशराइज करबा फूड पाई है ना तो एमती हमको देखिया को मिलला कि यूएसए वाज डूइंग सच काइंड ऑफ even we were dependent on Canada as well. So that time we had to depend on Canada, USA, Russia. These were the countries, though Russia was a favorable destination for all and as of now as well. So हमको एठी देखिया मिलुथिला कि that means we were not satisfied with the food. Food crisis थिला इंडिया रे. There was food crisis in India. Hence India, that means हमें केवल government of India and the political system and everyone, they wanted to be food हमें केवल independent हुआ पे चाहूँतले and hence there was a हम देखिबा तेणु करके हम चाहलु कि green revolution how है ना so that we will have the at least freedom of food तो freedom of food हमको बहुत जरूरी थिला so that is why we started that is green revolution है ना ग्रीन रेवोल्यूशन कहले एग्रीकल्चर को आगो को नहीं की एंड जदि हमें देखिबा आउ किछि इंपोर्टेंट जिंस मु कहबे एठी कि ग्रीन रेवोल्यूशन बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन वी वर हैविंग एग्रीकल्चर ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर subsistence agriculture. So because of the green revolution, now we started what as the green revolution came, green revolution time में कौन कले intensive agriculture कले intensive agriculture
and it was also the need of the hour because population was growing at the faster rate है ना since ଆମେ ଦେଖିବା 1955 ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ 1955 ରୁ 85 that was the period of population explosion. So as the population growing at the faster rate, so we were also that time we would required more food as well. So as the food was the necessary, that is why agriculture sector को हमको आगो को नबार थिला तेन करके ग्रीन रेवोल्यूशन ought to be तो हबार ही थिला एतिर किछि एक्सेप्शन न थिला that ought to be there तेन है ना ग्रीन रेवोल्यूशन हमें करिवार थिला. So green revolution एथिपे आनले at least to supply the food लोगों को food मिलू भोकिला के न रहंतु ये थिला टारगेट. तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टिके देखि देले. देन ग्रीन रेवोल्यूशन जेते आसिला कि ठीक अछि ग्रीन रेवोल्यूशन तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन करा जिवो कहले अधिक रो अधिक जेमति लोक चाष करिवे. रेवोल्यूशन अर्थ कोन जाहाकू कोनसी जेमति हमर आईटी रेवोल्यूशन चलछि जाहाकू हम कहू जे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्थ कोन सेम जिनसटा को बहुत लोक यूज करिवे. रेवोल्यूशन रो मीनिंग होछि बहुत सारा वर्ल्ड वाइड यूज होतबो. Now India रे कोन करा गला कि ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स everybody was or the farmers were encouraged to cultivate more, and those farmers those who were not doing they were also encouraged to they were also encouraged to cultivate. एमान को भी कहला कल्टिवेशन करिया पे. तो मोर प्रोडक्शन ऊपर ध्यान दिया गला कि प्रोडक्शन जेते के होची तार अधिक रो अधिक प्रोडक्शन केमती हबो. ओके देन तुमको ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं करा गला व्हाई इट वाज नॉट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कारण ग्रोथ रो जो स्टेजेस ऑफ जदि हमें ग्रोथ देखबा फर्स्ट यू हैव टू सैचुरेटेड योर एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर को आगे सैचुरेटेड करिया पड़िबो. देन यू विल कम टू द इंडस्ट्री है ना लोगों को खाइला तापर इंडस्ट्री आसबो. देन कम्स टू द आईटी. दीज आर द स्टेट है ना जदि हम देखबा दीज आर द स्टेप्स ऑफ ग्रोथ कोन से गोटे ग्रोथ रो स्टेजेस वुड बी फॉलोज like this. Otherwise कोन आइबो you don't have good agriculture काना एग्रीकल्चर रे लोक फास्ट इनकम करबे किछि से इनकम करके सेविंग करबे ता द्वारा हाउस होल्ड सेविंग बढ़िबो. देन इंडस्ट्रियल लाइसेंस आसबो काना एग्रीकल्चर बढ़िले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आसबो बिकॉज़ एग्रीकल्चर रे भी हमको देखा जो लोकन को से माने घर करबे ड्रेनेज पई दरकार कि इंस्ट्रूमेंट्स लेट से पावर टिलर हेला ट्रैक्टर हे गेला गाड़ी हे गेला से तो एग्रीकल्चर पई दरकार ना. तो ऑब्वियसली धीरे धीरे इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रो करिवो ता पई तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो करिवो. द नंबर ऑफ इंडस्ट्री विल ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है ना. तो ये हमको कि नंबर ऑफ हमको ताको लिंक करि परिबा. तन को ग्रीन रेवोल्यूशन जेतो आसिला कि दैट मींस हमरो प्रोडक्शन को बढ़ाइबार थिला एंड इंटेंसिटी बढ़ाइबार थिला. इंटेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर नीड टू बी इंक्रीज. इंटेंसिटी बढ़ाइबार थिला टोटल प्रोडक्शन बढ़ाइबार थिला फूड सिक्योरिटी हमको दरकार थिला फूड सिक्योरिटी है ना. तेणु करके हमको ग्रीन रेवोल्यूशन इट वाज ऑट टू बी जा भी हो. देन आसिला कि ग्रीन रेवोल्यूशन तो ठीक अछि कि ग्रीन रेवोल्यूशन हबो रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. एबे मु कहतिली कि प्रोडक्शन को बढ़ाइबार अछि केमिति बढ़ाइबा बाय यूजिंग द मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स है ना. द एग्रीकल्चर दैट मींस हमें जेतो ग्रीन रेवोल्यूशन कहउछे दैट रेफर्स टू द व्हाट प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन by but that is the incorporating modern tools and techniques. It is the period when agriculture of the country was that is what converted into the industrial system. नाम एग्रीकल्चर को कौन कले आने एग्रीकल्चर को आज ए बिजनेस देखा जीवो एबे है ना. आगे एग्रीकल्चर लोको खाली खाई की बंचू थले. नाउ it will give you income करके दबा तुमको एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन रे that was also target that will give you the income and that will also enhance your what that is I would say that is the economic life. जो इकोनॉमिक लाइफ अच्छी that will also increase तो सेतरे भी ग्रोथ देखा जीवो है ना. तो मॉडर्न मेथड की यूज करा जीवो टेक्निक यूज करा जेमती हाई यील्ड वैरायटी जाको हमें एचवाईवी बोली कहउचे है ना. काना हमें प्रोडक्शन हमरो टारगेट थिला कोन प्रोडक्शन को बढ़ाइबा इंटेंसिटी को बढ़ाइबा. एबे प्रोडक्शन इंटेंसिटी बढ़ाइया पे हेले सपोज जने वर्ष को थरे चाष करूची वर्षा आसीबो मानसून हबो थरे चाष करिवो that means that person does not have irrigation facilities hence the person is completely reliable on the monsoonal as a rainfall.
So if we will provide them the irrigation, they will do agriculture at least thrice, at least what I would say thrice. They will do agriculture thrice. Hence the total production will increase. And the okay, and the intensity of the land use pattern, though the land use pattern may change or may not, but the intensity of the land use will definitely change. We will have HYV in terms of seed, we will have tractors, power tiller, irrigation, pesticide, fertilizer, weedicide. These things are necessary to, to have the more production. Production बढ़ाया ପାଇଁ ଆମକୁ ये ଜିନିଷ ଦରକାର. And green revolution ରେ these things were given importance. Apart from that, so what were the things? ଆମେ କହିବା green revolution କହିଲେ ଆମେ revolution, that means ଅଧିକରୁ ଅଧିକ production କରିବା କେମିତି? You have to use the modern tools and techniques. Only modern tools and techniques ହେଲେ ବି ହବନି, farmers ମାନଙ୍କୁ educate କରିବାକୁ ପଡିବ. Okay, educating the farmers also one of the important component. So when we say the modern method and the techniques, that will comprises the HYV seed, tractor, irrigation, fertilizer, pesticide, then you would say, let's say I would say weedicide, then I would say road, କାରଣ ରୋଡ ନହେଲେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଲା ପରେ, ରୋଡ ଦରକାର. Then we will have power supply to that particular region because they will pump out the water so that that can be irrigated into the field as well. So power भी दरकार, road darkar, and also market as well, and also market, you need also market to what, for the selling purposes. Otherwise the production will be there but there would be no market for the sell out, and they would be, but the farmers would not get the enough. That's why modern tools, apart from the modern tools, you need to have road, market. Okay, these are the things. So that means हमें HYV ର ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କଲେ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କଲେ, है ना, କେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କର. ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଚାଇନା ୟୁଏସଏ କଥା, ତମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ कि we are having the world largest dry farming area in the world, and we are having the more farming land as compared to the China and USA. But still China is the number one number one producer in terms of the agriculture, and India is always comes second in terms of the producer. Sabu sector like milk number one producer, you are also potato, tomatoes, these are things. Cotton second, rice second, sugar cane second. So that means we are also a good producer in terms every direction आमे जदि देखिबा. तो फिर भी आमे कहीं ताले चाइना तो हमठु कम एरिया चाष करूची, यूएस कम एरिया चाष करूची, कल्टीवेशन डिस्पाइट दे आर आल्सो इन द टॉप पोजीशन. एमाने कोठी अछंती, टॉप रे अछंती. कोन पे? बिकॉज़ ऑफ लैंड इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज. तो लैंड यूज माने जो लैंड यूज टा इंटेंसिटी बहुत अधिक, एंड मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स अधिक यूज करते रादर देन द इंडियन फार्मर्स. दैट इज व्हाई इन स्मॉल एरिया दे कैन प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट. दिस पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर ताले हम कहबा तो ये थिला. सो 1967 जाय हमर गवर्नमेंट कोन करते देखबा. Until 1967 the government majority concentrated on expanding farming areas. केवल एरिया को केमती करबा, बट रैपिडली इंक्रीज पॉपुलेशन मु तुमको कहउतले उठी पूर्वरु फ्रॉम द 55, that is 1955 to 1985, this time it's known as the population explosion period in India. रैपिडली एतले पॉपुलेशन बढ़िला, हमको फूड रो दरकार थिला, है ना, तेणु करके हमको इमीडिएट थिला कोन ग्रीन रेवोल्यूशन. ऑलरेडी मु तुमको बैकग्राउंड कह देछि 1947 को थु नै की. So that is why we were badly needed the green revolution to feeding our own people, and the people otherwise they will starve out of food and they will die because of starvation. And the image of India would be also maligned in the international community as well. Karana Britisher jetala amku chadiki gale, that time many people raised the question whether they can sustain themselves, whether they can govern themselves. Now India has proved that ambiguities and the doubts those who were raising at that time, that now India is one of the top 5 countries in terms of the economy and the world largest population. तुमको इंडिया रे वर्तमान देखा जाउची world largest, we are now the world largest population country, है ना.
ହେଇଯାଇଛୁ already ଆମେ largest ହେଇଯାଇଛୁ ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ India now crossed the China and now the largest and the most populous country in the world. Okay, ये तमें लिखिपार. So that means ଆମର ଏତେ population ବଢିଲା କେମିତି because of the food availability. Had it not been the total population as we are having, it's like a distance, it would have been a distance dream. But now we are providing enough food even during the COVID time. I have never heard that somebody died because of the starvation, because of the out of food. एमती तो ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି. So that is why we are having enough food in and we are a net exporter now. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ. ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର. ଆମ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଆମେ ନିଜେ ଆଣୁଥିଲେ ଫୁଡକୁ. Now we are exporter. है ना, ये तो समझते जान इंडिया इज एक्सपोर्टर राइट नाउ. जमती तुम देखो यूक्रेन रशिया वार है जो फूड क्राइसिस चली दुनिया रे इंडिया ही संभालुची है ना. इंडिया इज नाउ गिवर टू द वर्ल्ड. ये तुम लिखि परियो नाउ वी आर द गिवर. दैट टाइम वी वर टेकर. सेतबेले आमे टेकर थिलु. नाउ वी आर गिवर, नीड गिवर. इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मोर देन 315 million tons of food grain annually. Can you imagine? 315 million tons of food grain only. I'm not talking about the total agriculture production. I'm talking about only food. Only food grain, 305 million tons of food grain. That is enough to feed your total population. So this is the success stories. I would say when Green Revolution was not there, you would be amazed to listen that it was only 50 million tons. It was only 50 million tons in 1950s. Before the Green Revolution or in the early hours of independence, we would produce 50 million tons of food grains, which was not enough for the it was not sufficient for the feeding of the people. Now we are providing or producing more than 315 million tons, which is enough to provide and to feed our peoples. The credit goes to the first, that is the William Gerd, and the Norman Barlow, the father of Green Revolution in the world. World exactly the father of Green Revolution होची Norman Barlow is the real father. ये कान आमर गोटे कही कि सिस्टम करके रखी कि फादर होची आमर सब फादर बुझो स्वामीनाथन यार किसी काम ही नहीं आपको कह दे फादर पता नहीं किया को फादर टाइटल देला मु भी बुझ पानी. जस्ट बिकज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थिले जाकि नॉर्मल बालो को मीट कले सेठू नहीं आसले सीड एठी देई देले हे गेले फादर. But all credit goes to this Norman Barlow, the person from the Mexico who exactly developed that HIV crops. तो ताकू जो रिसर्च करके डेवलप करितला that was HIV जो अछि high yield variety आकू डेवलप and that was developed by Norman Barlow. बस ये खाली कौन कहला आकू गवर्नमेंट टारगेट देथिले कि आपण being the secretary of the agriculture you have to go and invite the Barlow to India. बट ये जाके बारलो को इनवाइट कले. बारलो कहले अरे मोर किसी जीवा दरकार नहीं. आज द मैक्सिको मतलब बारलो इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन मैक्सिको एज वेल. मैक्सिको आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन दुनिया रे तुमको मैक्सिको रे देखा जीवो. ये भी तुम माने जानछो मैक्सिको है ना. मैक्सिको सिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी बट इन द वर्ल्ड एज वेल. ये लोग कहले कहले नहीं मते जीवा को पड़बानी. डू वन थिंग मैक्सिको एंड इंडिया they are having same type of climatic condition, so better that HIV which I have developed for the Mexico will be worked in India, don't worry. So one thing गोटे तुम काम करो तुम नहीं कि जाओ ताकू देखो जदि किसी फरक जदि किसी मॉडिफिकेशन करिया पड़िबो then we will do modify that one also for the India as well. So that means ये जने जेनेटिक्स थिले बुझि परछो. तो ये एक मिनट रो ये तो सेक्रेटरी थे लॉन्च द ग्रीन रेवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सुनोन. अच्छा हाँ यांकर हेल्प रे मतलब ये जो मु कहले जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे ये किसी एचवाईवी फूड्स को बा क्रॉप को डेवलप करना बट साइंटिफिकली इट वाज डेवलप बाय नॉर्मन बार्लो जो कि मैक्सिको कहला जाको कहे ड्वार्फ व्हीट बोली कहे है ना. जाको तमरो ड्वार्फ व्हीट बोली कहे है ना. ये जो ड्वार्फ व्हीट को इट वाज डेवलप्ड बाय बार्लो एंड दैट वाज ब्रॉट टू इंडिया है ना. ब्रॉट टू इंडिया एंड इंडिया रे कल्टीवेशन करके ग्रीन रेवोल्यूशन करा. दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू स्वामीनाथन, hence is been called as the father of the green revolution. तो ये होची स्टोरी की काहे कि तांको फादर कुआ जाईची. ओके सो दिस पर्सन एग्जैक्टली ये कह गए जोटा कोई ड्वार्फ व्हीट
ड्वार्फ व्हीट ये ही प्रोडक्शन करथिले बा जाको इन्वेंट करथिले मु कहबी है ना। तो ये होची तांकर काम स्वामीनाथन काम बुझीगल। एंड मैक्सिको मु तुमको कहली मैक्सिको रे ग्रीन रेवोल्यूशन आनिथिले ये लोक। एंड मैक्सिको रे जेहेतु कना मैक्सिको रे भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम तांकर भी फूड प्रॉब्लम and also they don't have also good relation with USA as usual. That's why. So food deficient thila amaro. Now the movement of the Green Revolution was a great success, and the change the country's status from the food deficient to the food surplus, I would say. Hana. So it was started 1967 and lasted till 1978. The Green Revolution led to increase the agricultural production, especially Haryana, Punjab, Uttar Pradesh. Now that means normal बालो कथा मु कहली है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन रो मैप हमें तो देखिबा नो डाउट। सो इन ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वर टू क्रॉप्स वी the two crops were chosen that time. One was what wheat and was rice. So एक था में rice or it was paddy and wheat. Two crops were chosen that time for the green revolution. दीटा crops हमें green revolution ପାଇଁ choose करथिले। One होची rice, one होची paddy. Okay, now question arises if I ask you कि why that two crops were chosen for the green revolution? काहेकि बाकी सारा चूज कलेनी कारण अरे बाकी तो आमे डाली परे खाइबो आगे भात खाइकी बंची जान लुण लगेकी बस ये होची कांसेप्ट। दैट मीन्स आमे जदी कहबा कि फास्ट staple food kono amara staple food hochi rice and wheat. As the rice and wheat are the staple food, so first we will concentrate on the staple food, then we will comes to the oil seed baga ये सब परे देखिबा आगे लोक खाइ कि बंची जानतो तेन करी rice and wheat को एथे फोकस करा गला। as the north India the peoples are having the staple foods in form of wheat, and the south India we are having the staple food in terms of rice. So that is why the two crops were chosen, so that ଆମର north ରହିଯିବ south ରହିଯିବ ताकि हमें କିଛି କରିବା ପଡ଼ିବନି। Now you can see if I draw the map, so green revolution where exactly it took place. Okay, so green revolution, so you have to also draw the map like this frequently. Here it would have like this. Okay, तो मैप टिके फटाफट ड्रॉ करियो तुम मैंने भी सीखी जीवो है ना। The green revolution it was the area patch 1 for the green revolution, and this was the area for the green revolution 2. So two regions were decided for the green revolution. Hope voice is audible to all. समस्तों को वास्ता आछि है ना। हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन जदि हम देखा दीटा क्रॉप्स थिला दैट वाज इट वाज योर व्हीट एंड पैडी। टू क्रॉप्स वर चोजन एंड द रीजन मु तुमको कह दिली कि काहे की व्हाई दिस टू क्रॉप्स। नाउ कम्स टू द टू रीजन। दिस वाज वन रीजन जो थिला तमरो पंजाब, इट वुड बी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी ये थिला गोटे रीजन। मध्य प्रदेश रो किछि पार्ट हाँ ये रहला तमरो ग्रीन रेवोल्यूशन रे। एठी कोन करा गला wheat को निया गला। एठी कोन गला wheat and APTN एठी निया गला तमरो rice, एठी निया गला rice. Now if I ask a simple question to you, then why these two regions were chosen? They could have choose this one, they could have this one, they could have this one. For the rice as well they could have, for the rice Bengal could have chosen, they could have choose the Bengal as well, but it was not. Then why the Tamil Nadu does this thing? Tarvi region. See, the reason is that because you are having South India, by the time you are having large dams out there. So but the large dams, that means the irrigation was not there in Odisha or I would say Jharkhand, Chhattisgarh. They were not there because they come to exist in 20 or 2000 itself. So as they were having irrigation facilities, Tamil Nadu and Karnataka, all these regions, they are having old dams and the large dams prior to the 1967 or prior to the 1965. Okay, as they were having large dams, that means the irrigation would be provided like a region. Bina irrigation rahi paribani green revolution. So irrigation jehetu eti facilities thila sethipai
and because of the climatic condition the rice was chosen here. Because the South India is hot, humid, and rainfall is pretty good, 100 centimeters rainfall that would be required for the rice cultivation. So by keeping in the mind all these things, South India को हमें एत्थे ପାଇଁ choose कले rice because of climatic condition which is required for the rice is what? It should be hot, it should be, एक minute, climatic condition जो दरकार तुम्हारो rice ପାଇଁ hot होइबा दरकार, it should be humid, and the rainfall should be 100 centimeter. On the top of that alluvial soil you required, and on the top of that you required irrigation and also the cheap labor. These are the things required for the rice, and all these conditions were satisfied this region. Plus on the top of that, one thing you have to remember, if you have gone through the monsoon, the South India that receive rainfall from the both end, from the southwest monsoon and from the northeast monsoon. Okay, southwest monsoon and northeast monsoon. Hence, this region receive rainfall throughout the year. I wouldn't say throughout the, but maximum parts of the times. Okay, maximum times around the year ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ କରିକି ଏ region ରେ ଯଦି ଆମେ green revolution କରୁଛେ ଆମକୁ ପାଣିର କିଛି problem ହବ ନାହିଁ। But if you are doing in this part of, let's say, Odisha, you will have rainfall only during the time of the southwest monsoon, or the rest of the season that would be dry. And even we were not having the good infrastructure in terms of the agriculture which was required for the green revolution. So undoubtedly, we had to, the government had to focus on these two parts because of the irrigation facilities, because of the climatic condition, all these things. How would ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ, where rice was that times chosen for the South India, because South India ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା is the staple foods and the most is the rice. So like Odisha, we are also having the staple food in terms of the rice. That is why it was also thought कि जदि मो राइस को, लेट्स से राइस को तमे पंजाब हरियाणा ग्रो करिवो, देन यू हैव टू ट्रांसपोर्ट, तापन ट्रांसपोर्टेशन पई तो कॉस्ट लागिवो ना। सो बेटर टू डू द राइस हियर सो दैट एठी रहइबो, एठी बिका हबो, व्हीट एठी हला, एठी चला, सो दैट हमें कबे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमें सेव करि परिबा। Okay, hope you are getting me. So these were the things they kept in mind, that was keeping in mind, by keeping in mind these things, they decided to go for the wheat in this part, and I would say the rice in the below part. Hope now you are getting why these two places were chosen. And on the top of that, for the wheat, as I said, wheat was chosen for this particular region because that climatic condition need for the, like, the temperature 15 degrees Celsius during the time of harvest ରହିବା ଦରକାର कि हार्वेस्ट ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ତମେ 15 डिग्री ରହିବା ଦରକାର, विंटर टिके रेनफॉल हवा दरकार, एंड एठी तमरो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुए तो रेनफॉल टिके हिजबो तो वाटर भी मिली जबो, इरिगेशन भी हेगला, बस। होप यू आर गेटिंग मी, केमती मु क्लाइमेट को कनेक्ट करूची, है ना। क्लाइमेट को केमती कनेक्ट कराला, ट्रांसपोर्टेशन को केमती करागला, लोकंकर फूड हैबिट्स को केमती कनेक्ट करागला, all these things are not talked in the books, neither we talk in the books, neither we talk in the classes, because as I have been teaching, sir, it's been long time I have been associated with this subject, things that will evolve with you, that if you are associated with certain things, ତେଣୁ କରିକି ଇଏ ଥିବ, ତମେ ଲେଖିପାରିବ these things कि why this place was chosen, why this place was chosen, what was the reason, ये सब ତମେ ଲେଖିପାରିବ। hope you are getting me। then ये तो ମୁଁ କହିଲି कि କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ କୁ ଚୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ଏ ପ୍ଲେସ୍ କୁ ଚୁଜ୍ କରାଗଲା। ତମେ ଏଠି रेनफॉल लिखिବ, ए रीजन रे वर्षକୁ ଦି ଥର रेनफॉल हुए, ए रीजन रे वर्षକୁ ଦି ଥର रेनफॉल हुए। केमिति? one would be southwest, one would be a northeast monsoon, here would be southwest and also western disturbance. On the top of that you are having Bhakra Nangal. Okay, so large dams also in this section, and Punjab also very fertile. Okay, very fertile land also there. So these are the, okay, ये ही परिबो तमे। अच्छा, एथि आउ कार किछि डाउट अछि एनीवन? हे परिबो समस्तंगर कोन को माने now you are in a comfortable position कि why these things were chosen, काहेकि ई जगह, काहेकि सेई जगह हे परिबो सिद्धार्थ बुझा पड़ुछि, चिन्मय अंकित मझिरे मझिरे गाइते हे जो चिन्मय भी रोज क्लास करो भाई, डेली क्लास कले किछि ना किछि तो वेस्ट जीवनी देखो। हाँ, एमती गोटे दिन हो पारे मु सेई दिन टिके खराब क्लास नहीं जाई पारे, मतलब वी आर आल्सो द ह्यूमन बीइंग।
बुझिपारुछ ना शुणाउछि ना वॉइस आसुछि केही जण किछि कहले देखियो मते शुणाउछि कि नै ओके शुणा जाउनी ठीक अछि कंटिन्यू करो तमे मु मतलब शुणा तो जाउछि तमनको सेतिकी हेले दरकार तेमे देखो आमे जानिले कि ग्रीन रेवोल्यूशन रो बैकग्राउंड जानिले ग्रीन रेवोल्यूशन किए कोठु आसिला मेक्सिको कथा मु तुमको कहली मेक्सिको को फूड दरकार थिला है ना तो तेणु करके मेक्सिको रो आसिला मेक्सिको जदि तुमको कहा जे मेक्सिको पई जदि तुम वर्ल्ड मैप ड्रॉ करिवो ना मेक्सिको रो लैटिट्यूड और इंडिया रो लैटिट्यूड जो तुमरो रहइबो दे आर सेम लैटिट्यूड रो अछि सेथि पई सेम क्रॉप टाको इंडिया रे आनी के हमें कल्टीवेट कर देले है ना ये तुमको जाना पड़ गला एबे okay now we will focus to our other part so green revolution ro component kono thila jodi tumko koi what was the component it was hiv fertilizer mechanical irrigation these were the component है ना ध्यान से मन करो these were the components of green revolution ये सब green revolution रो component okay आकु तुमको पढ़िया को पड़िबो ग्रीन रेवोल्यूशन रो कंपोनेंट तेना आकु न पढ़िले तो लिख परबो जैसे एचवाईवी आसिले सिना प्रोडक्शन बढ़िबो पेस्टिसाइड बढ़िले सिना प्रोडक्शन बढ़िबो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और जदी तमे एबे देखिबो एठी लिंक करा जिवो as the green revolution was in Punjab, Haryana, Rajasthan, Western UP, the fertilizer industry here concentration also more. जदि तुमको मु फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऊपर गोटे क्वेश्चन आसेला लेट्स से तोर इंडस्ट्रियल पार्ट रे गोटे फर्टिलाइजर ऊपर क्वेश्चन आसेला लेट्स से मु कहूँ गोटे क्वेश्चन आसीगला तो तुम जानव केमती कौटी इंडिया रे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अच्छी जोठी इरिगेशन आगे होता जोठी ग्रीन रेवोल्यूशन से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री so here also fertilizer industry ro concentration adhika because as the green revolution started in these two places they were also having more required more fertilizer and fertilizer industry also established here and here that is why the southern and the northern India they are having more fertilizer industry as compared to this part now fertilizer industry also growing in Gujarat रो grow करी गला है so ये तुमको एटा भी तुम लिखि पारे कि fertilizer industry revolution और fertilizer India is now a what आमे आमे जानछो कि हमर fertilizer हमें import करूचे सबुठ important कथा हां we are importing fertilizer we are not self satisfied in terms of fertilizer हमें fertilizer रे self satisfied नुह हमें import करूचे जहां भी इंडस्ट्री होची दे आर कंसंट्रेटेड इन दिस पार्ट एंड गुजरात पार्ट ओके देन मॉडर्न एग्रीकल्चर आसिला इरिगेशन को हमें ध्यान देले सो दैट हमर प्रोडक्शन बढ़िबो कंपोनेंट्स तो एचवाईवी को आसीबा आगे नाउ वी विल कम्स टू द एचवाईवी ये जेमती कहूचे कना तुमको लिखिया पर ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा 60 मार्क तो आसे जानछे तुमन नॉर्मल बारल मु तुमको कहले रेकमेंडेड द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग ड्वार्फ व्हीट मु तुमको ऑलरेडी कह देछि ड्वार्फ व्हीट कथा मेक्सिकन ओरिजिन मु ऑलरेडी तुमको कह देछि क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया रे कह देछि सब कह देछि तुमको खत्म है ना देखो जहां मु कहथि सब अछि से नॉर्मल बार लोग कहथिले रेकमेंड कले कले देखो इंडिया को नै जो मेक्सिको रे जो क्लाइमेट अछि तमरो सही क्लाइमेट अछि किछि असुविधा हबो नै इंडिया रे आज यू आर हैविंग द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन similar to Mexico that will work for you okay that is why on his recommendation the semi dwarf variety named Sonoram 64 and that is the what Lerma Rajo. They were chosen and released for the cultivation in the irrigated areas of the field. These varieties of the high yield variety brought the green revolution or the revolution in terms of the wheat production in India, and India became the second largest producer in terms of wheat. এটা লিখিব তুমি and India became the second now India is the second largest producer of wheat and just below to China and everyone aware of that fact okay so like the rice we also got from the rice that is the what Philippines that is the Manila रे international rice research center अछि international rice research center जदि हम देखिबा कोठी अछि Manila Philippines रो capital ओके सेठू आमे आनिले कोन ना राइस आनिले है ना तो एचवाईवी इन टर्म्स ऑफ राइस आनिले तो तापरे आमे राइस रही गेला बस द केमिकल तमे जानि छ आज केले आमे यूरिया जो यूज होजी यूरिया है ना से यूरिया टा गोटे कोन ये गोटे केमिकल सिंथेसाइज्ड फर्टिलाइजर है ना आमे सेथरे अमोनिया फॉस्फेट यूज करूचे अमोनिया नाइट्रेट यूज करूचे यूरिया भी आमे यूज करूचे ये सब कोन दीज आर द नाइट्रोजन यूरिया गोटे जानि छ तमे ये गोटे नाइट्रेट आमे जाको कहि परिबा है ना बुझि परछ
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करा जाए इंडस्ट्रियल बाय विथ हीट एंड हाई टेम्परेचर रे ताको फिक्सेशन करा जाए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करा जाए इंडस्ट्रीज रे देन फॉस्फेट फर्टिलाइजर में यूज कले कंटेनिंग द फर्टिलाइजर लाइक फॉस्फेट कैल्शियम है ना ये सब फर्टिलाइजर आसीगला पोटासियम है ना ये सब बुझिपारछ नहीं देख यूरिया तुम ग्रोथ रे हेल्प करे पोटासियम ताकू न्यूट्रिएंट दिए तार हेल्दी कराए ताकू स्ट्रांग करे हेल्दी करे प्रोडक्शन बढ़ेबो है ना ये तुमको करे पोटासियम नाइट्रेट ये सब हम यूज करे जदि गछ को बढ़ेबार अच्छी देन यू हैव टू यूज द यूरिया फटाफट मारदे से कौन कर गछ ग्रो कर जदि गछ को तुमको स्ट्रेंथ देबार अच्छी देन यू हैव टू यूज द पोटासियम ओके पोटासियम यूज करके कारण तुमको सर ए फर्टिलाइजर बिकॉज इंडियन सॉइल्स आर डेफिशिएंट ऑफ व्हाट nitrogen. Indian soils are deficient of potassium. That is why nitrate and urea, we are every farmer, almost 99% of the Indian farmer, they use urea, they use potassium, and the urea is widely used because Indian soil is deficient of this particular, because 90% of the Indian soil is deficient of nitrogen. And that is why in the urea वगैरह use कराउछ. So these were the, I would say, what fertilizer, the manures we were required. Then comes to the mechanization. Mechanization रे कौन करिबा जेमते प्लाव को हळ करिवार अछि ताकू पावर टिलर आनो नले ट्रैक्टर आनो पंप सेट आनो एनर्जी कथा मु कहउथली हार्वेस्ट पई तुमको लैंड लेवलर आनो लैंड को लेवल करिबा ट्रैक्टर आनिबा काटिबा जो स्प्रे करिबा मशीन आनिबा जो पेस्टिसाइड विडिसाइड को स्प्रे करंती देन थ्रासर आनिबा जेमते धान काटिबा बाडेबा ये सब तुम आसीगला दिस आर द मेकानिकल पिकर्स आजकल तो देखो धान पोती भी दउची काटी भी दउची बाडे भी दउची सब कर दउची मशीन है ना इवन तुम सीड को स्प्रे भी कर दउची तो ये सब मशीन रे दरकार थिला ऑन द टॉप ऑफ दैट वी वर आल्सो रिक्वायरिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पावर कना नले इरिगेशन हे परिबो नै पंप जो तुम यूज हबो तेणु करके आम ताधरे भी कौन कले सब्सिडीज देदेले एथरे आम सब्सिडीज देदेले इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स मन को सब्सिडीज देदेले ये तुम मन रखो ये जो ट्रैक्टर है सबुथ कौन लगे सब्सिडीज लगे सबुथ सब्सिडीज आज भी तुम ब्लॉक को जब जीव ट्रैक्टर को नहीं सब्सिडीज देवे इफ यू आर बिलोंग्स टू द बीपीएल फैमिली तो एपीएल ऑल दिस हैविंग है ना ये सब लगुच देन इरिगेशन द हाई यील्ड वैराइटीज यूजुअली रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर मु तुमको ऑलरेडी कहि तेणुक इरिगेशन हमको दरकार थिला नुआ नुआ डैम फॉर्मेशन करबा दरकार थिला ओके तो ये थिला हम कहबा दैट मींस हम सेते पे कोन कले डैम सब कंस्ट्रक्शन करा गला है ना डैम सब हमें लार्ज एंड मीडियम हम कहबा मीडियम्स डैम्स किछि तुमको लार्ज किछि स्मॉल आ किछि मीडियम्स डैम आम कंस्ट्रक्शन करिया को लागी गले प्लस वाटर सेट मैनेजमेंट आपको आम कले है ना सो दैट वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेबा ऊपर आम ध्यान देले जमती इंदिरा गांधी केनाल तो धीरे 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 आम केनाल सब स्ट्रक्चर कले है ना जोटा कि कमांड एरिया डेवलपमेंट पढ़ाई है ना तो नंबर ऑफ केनाल वगैरह भी आसीगला इरिगेशन करिया पई देन एडवांटेजेस कौन देखो एडवांटेजेस तो ग्रीन रेवोल्यूशन रो बहुत ही ज्यादा अछि एथला ग्रीन रेवोल्यूशन रो बैकग्राउंड देन एडवांटेजेस रे जदि हमें देखबा आरो सबटु गोटे बढ़िया कथा कहबा एडवांटेजेस रो होची देखेन स्लाइड रो अछि कि नहीं या ऑन एकेडमी पढौतले सेते रो स्लाइड अछि जब हो अच्छा एक मिनट यार नाही तमन को जो वीडियो लिंक सब देछि एग्रीकल्चर रे सेतरे देखिबो बहुत बढ़िया अछि एग्रीकल्चर को पढै छी एबे पढ़े जस्ट किसी दिन तले ना फिजिकल क्लास रे तो तार मु लिंक गुड़ा दे देछि तुमको टिके हाँ क्वालिटी वीडियोस रो एते भलो नहीं एई वीडियोस बोले एते रहबोनी बट टिके तुम देखि दो बहुत किंतु माने जो ऑडियो क्लैरिटी एते खास न थो बट किंतु कंटेंट रो किछि कमी नहीं तो ये जो इरिगेशन हमको आसेला तो इरिगेशन ये सब हम कहल हाँ मु कहथली कोन एडवांटेजेस रे गोटे काम करबो इंडिया रो रैंक सब बाहर कर दो मु आपको ये गोटे गोटे जाऊनी कहना ये तो बहुत इजी पार्ट बस आपको डेटा दरकार यू नीड व्हाट डेटा तुमको सर डेटा केमती करबा देखो एडवांटेजेस कोन दिन थिला वी वर इंपोर्टिंग हमें इंपोर्ट करूथले नाउ हमें एक्सपोर्ट करूचे तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ना वर्तमान बेनिफिट होची तुम एक्सपोर्ट करूचो दिन थिला तुम 50 मिलियन टन्स प्रोडक्शन करूथलो नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग 320 और 15 मिलियन टन्स दिस shows the positiveness or this is the what advantages of green revolution
ओके तमरो फार्मर्स मनकर इनकम पड़ी फूड सिक्योरिटी तमे एंश्योर कर पारुछो इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड डिस्पाइट द फैक्ट हम पाखरे एनफ फूड ग्रेन अछि टू फीड आवर पीपल दिस इज द बेनिफिट होप यू आर गेटिंग मी जे तुमको बेनिफिट कहा छबो दीज आर द बेनिफिट्स तमे लिखो राइस रे हमें सेकंड अछु व्हीट रे लेट्स से व्हीट रे हमें सेकंड अछु मिल्क रे हमें फास्ट अछु टी रे हमें सेकंड अछु जूट रे हमें फास्ट अछु एक रे हमें फास्ट अछु है ना एई सब जो डेटा लिखि देले दैट वुड बी द एडवांटेज एडवांटेज तो एया ना बुझ परछो नहीं होप यू आर गेटिंग कॉटन रे हमें होचे सेकंड तो एई जो डेटा जो अछि तमरो सब डेटा को पुट कर देले दैट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन because of green revolution India is the second largest producer of rice, second largest producer of wheat, second largest producer of cotton, largest producer of milk, then largest producer of vegetables, then तमे देखिबो तमे ऑरेंज कथा ने हॉर्टिकल्चर वगैरह भी आसी गला धीरे धीरे सुगर केन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बस सब होची तमरा बेनिफिट दैट मींस हमें कहबा वर्तमान देखो हमर द सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी गला प्रोडक्टिविटी बढ़ी गला फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ी गला फ्रॉम 81 मिलियन टू केते है 200 मिलियन बट एटा 200 लिखिबो तमे लिखिबो 315 मिलियन है ना 10th प्लांट धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी 277 तापर 2000 एबे बर्तन होची 315 मिलियन ये हैला तमर इंक्रीज एथरे जॉब आसी गला एंटरप्रेन्योरशिप भी आसी एमते ना कि खाली जॉब एम्प्लॉयमेंट हाँ एग्रीकल्चर एडवांटेज है तुम 18% जीडीपी की दौर ये तो बारंबार मुझे कहीकि भी थकी गले जीडीपी को 16 ରୁ 18% जीडीपी शेयर करुच्ची 55% ऑफ योर लेबर फोर्स एंगेज्ड देन रूरल इकोनॉमी 70% डिपेंड करुच्ची एग्रीकल्चर ऊपर है ना योर रूरल इकोनॉमी 70% एग्रीकल्चर ऊपर डिपेंड करुच्ची more than 50% एम्प्लॉयमेंट एठू आसुची पीपल्स आर एंगेज्ड इन टर्म्स ऑफ 18% जीडीपी रे तुमको सेल्फ करुच्ची है ना देन बुझ परछ नहीं तो फूड सिक्योरिटी तुम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी अच्छी एक्ट 2013 ताकू ये दौची देन आज जो तुम एत सब स्कीम चलছে प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो कि तुम बीपीएल फैमिली सब को दिया जाउची एम्प्लॉयमेंट जनरेट करुच्ची सो दीज आर द बेनिफिट्स प्लस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को थले चाहे से लेज है जो चाहे से हल्दी है जो चाहे से चूड़ा है जो ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जे हमें घरे बसी ऑर्डर करी खाउचे these are because of the food processing industry I would say food processing industry का जो होइछि because of the production तो ताकू भी हमें लिखि परिबा कि these are the benefits of what green revolution and India is now one of the largest producer of the food grain सबुठो इंपोर्टेंट कथा तमे लिखबो कि देखो जेते वार चलीछि यूक्रेन आउ जो हमर कोन रशिया वार चलछि ए टाइम रे दुनिया हमको फूड मागुछि लाइक मु कहबी इजिप्ट कथा नहीं जाओ केनिया कथा नहीं जाओ तो अफ्रीकन कंट्रीज जो माने अछंती दे आर नाउ डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर द फूड अदरवाइज खाया को पिलिबा नहीं इथियोपिया केनिया इजिप्ट इवन अरब कंट्रीज तमर जो अरब कंट्रीज दे आर आल्सो डिपेंडेंट फॉर द फूड ऑन इंडिया तणुकर एमाने इंडिया इज नाउ ए ग्लोबल सप्लायर ऑफ फूड तो इंडिया रे दैट मींस आमे कहबा आधार कोन होची हमर सॉफ्ट पावर इज इंक्रीजिंग योर सॉफ्ट पावर धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउची तमरो है ना ये सब जिन सब तुम एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज लिंकेज्ड जेमते मु कहली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तार ग्रोथ होची देखो स्लाइड रे तो कोन अछि मु देखुनी केना मो टाइम नहीं देखिया पे हां ये सब हमको देखिया पड़िबो एम्प्लॉयमेंट मु जोटी जीडीपी कथा कहली ये सब कथा कहली बुझ परछ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ओके होप यू आर गेटिंग मी एंटरप्रेन्योर भी तुम लिखि परिबो न्यू एंटरप्रेन्योर भी आसुची ए फील्ड रे एग्रीकल्चर रे जेमती तुम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेख हल्दीराम आसीगला एवरेस्ट आसीगला एमती जेते ब्रांड सब आसी कि नहीं एबे भाबो दिस ब्रांड्स आर बिकॉज ऑफ द पॉसिबल ऑफ द गुड एग्रीकल्चर एबे हमें कहि परिबा सुपरमार्ट सब आसीगला जब भी हो so this is the benefit or this is the outcome of agriculture now we are also having some repercussion as well किछि disadvantages अछि कारण तमरो थिला advantages and disadvantages हाँ advantages औ लिखिबो तमे like the Punjab Haryana all these peoples farmers they are now the rich farmers per capita income of Haryana Punjab रे देखो ना सब highest in India per capita income in terms of the farmers जे देखिबो and overall also they are of the top 3 Punjab Haryana जो लोक मान को per capita income they comes in always top 3 आसंती India रो that is because of the green revolution Andhra Pradesh is developed because of the green revolution Telangana Tamil Nadu they are the developed state in India because of the green revolution the background hope you are getting me है ना
Now comes to the disadvantages of the green revolution. मु disadvantages को बेसी डिस्कस करिबो नहीं, शॉर्ट डिस्कस करिबो, त माने लेखि पारिबो है ना। केमति मु कहूची disadvantages को मु कोन करबी, इट वुड बी इकोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस आगे हमें देखिबा। फॉर एग्जांपल देखो स्लाइड रे कोन अछि मु देखुनी, त माने देखिथिबो स्लाइड मु देई देबी ना। डिसएडवांटेजेस रे कोन अछि, पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी एथिरे आसिला। पंजाब रहउची 1% फॉरेस्ट एरिया, हरियाणा रहउची 3% फॉरेस्ट एरिया, ठीक है देखि दो, आई माइट बी रॉन्ग है ना। बट एमानकर जो फॉरेस्ट एरिया मु देखिबी वर्तमान 1% फॉरेस्ट एरिया पंजाब रो, 2 to 3% पंजाब हरियाणा रो, यूपी रो भी से 3 to 4%। why forest area decrease? Because of the green revolution people started to acquiring more and more cultivated area, गछ को काटिकी कल्टीवेशन कर देले। होप यू आर गेटिंग मी। तो टोटल आमे कहबा फॉरेस्ट एरिया कमी गेला, ड्रास्टिकली रिड्यूस हे गेला। वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ऑल दिस रीजन रे हमको देखिबो फॉरेस्ट कवर पूरा खत्म हो गला है ना। एबे तो तमरो चाली इंक्रीज करा जाउची, बट जदि 1990s रे देखिबो, 2000 रे देखिबो ओनली 1% फॉरेस्ट एरिया थिला, 1% फॉरेस्ट एरिया पंजाब पई है ना। 2000 जदि देखिबो 2% फॉरेस्ट एरिया फॉर हरियाणा, भाबो 2% ओनली, दरकार केते 33.33 तमने जानिचो फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। बट किंतु एमानकर बहुत ही ज्यादा कम, तेणु करी ये इकोलॉजिकल इम्प्लिकेशन, इकोलॉजिकली जदि हमें देखिबा तो रिपरकशन रे कोन आसीबो, इन टर्म्स ऑफ रिपरकशन जदि इकोलॉजिकली देखिबा ये होची इंपोर्टेंट ना। सेकंड होची ग्रीन रेवोल्यूशन रे CO2, जदि तमे देखिबो CO2 एग्रीकल्चर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CO2 कोन पे डीजल लगे की पंप सब पंप सेट चलेले, बुझि परछो माने आ सब्सिडीज मिलिला, राति रे चलै देले पंप, सकाळू आसीबो बंद करिया पे, कारण इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री रे मिलुची। ता द्वारा हमें कोन हैला, दैट मीन्स तमरो ग्राउंड वाटर जदि देखिबो डिप्लीटेड फास्ट इन 90% of the groundwater in UP, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, all these region, and India is the world's largest exploiter of groundwater. এটা মনে রাখবে, ইন্ডিয়া ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সপ্লোইटर, বিকজ তোমরা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ফ্রি ଦେଇଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପମ୍ପ ଚଲେଇକି ଇରିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ইয়াର ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କ'ଣ ହେଲା, ଖତମ ହେଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଖତମ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, drought area बढ़ी बढ़ी जीव। This is very important, that is why Punjab, Haryana, Western UP the drought area is increasing because of lack of moisture in the soil, as the moisture is finished due to the over exploitation of the water from the ground due to the what, free electricity, or I should say subsidized electricity. Hope you are getting me। that is also environmental implication which is written in your syllabus है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन अधिक होची, ग्राउंड वाटर रिचार्ज खत्म हो गेला, सो हेला नहीं, ग्राउंड वाटर खत्म हो गेला, फॉरेस्ट एरिया खत्म हो गेला। एंड पॉल्यूशन कथा देखो, एबे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एठी पॉल्यूशन काहे की, बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग। ताकू भी तमे एबे लिखिबो, स्टबल बर्निंग एंड पॉल्यूशन, दैट यू कैन आल्सो ऐड टू द फैक्ट, स्टबल बर्निंग एंड पॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट आई विल कम्स टू द यमुना रिवर। यमुना रिवर कौन हो गला, यूट्रोफाइड हो गला, कौन पे, समस्ते कौन कले, फर्टिलाइजर यूज कले। समस्ते जिते फर्टिलाइजर यूज करिवो, दैट फर्टिलाइजर विल बी रन ऑफ, ये रन ऑफ है कि कुआडे जीवो, एक्वाटिक इकोसिस्टम को यूट्रोफिकेशन करके खत्म करिवो। तेणु करी वेटलैंड रो एरिया कमी कमी गला, यूट्रोफिकेशन हैला, तमरो रिवर सब पॉल्यूटेंट हैला, वाटर बॉडी सब पॉल्यूटेंट हैला, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हैला। आउ ये होची ग्राउंड वाटर सबठु अधिक पॉल्यूशन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर जदि हमें देखबा तार पॉल्यूशन हबर रीजन भी हमर बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना। होप यू आर गेटिंग। तो नंबर ऑफ एमिति तुमको इकोलॉजिकल इम्प्लिकेशन देखा को मिलिबो, ओनली यू हैव टू ओपन योर माइंड एंड गो थ्रू एनी काइंड ऑफ, मतलब जहाँ तुम एनवायरनमेंट जदि कि पढ़ी थिबो से ही लिंक करि परिबो, अदरवाइज तुम जदि भाबुछ ज्योग्राफी जे पढ़ाइबो से एनवायरनमेंट आउट रे पढ़ाइबो, एटा हे परिबो नहीं। हां मु एनवायरनमेंट पढ़ाई बोली all those things I know कि I can connect, बुझि परछन। एता तो मु फॉरेस्ट पॉलिसी रे कनेक्ट कर दे परिबी, मो सस्टेनेबल फॉरेस्ट दरकार सेथरे कनेक्ट कर दे परिली। तो तुमको भी सेमती डिफरेंट एरिया रे कनेक्ट करिया पड़िबो, एनवायरनमेंट रे जहां पढ़िछो ओके, ताको कनेक्ट करके इकोलॉजिकल इम्प्लिकेशन लिखिबो। केमती पॉल्यूशन हैला, एयर पॉल्यूशन देखो, एग्रीकल्चर रे सॉइल पॉल्यूशन हैला, एयर पॉल्यूशन हैला, वाटर पॉल्यूशन हैला, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हैला, एयर पॉल्यूशन द्वारा लोक माने ये हेले हैरान हेले,
तो नंबर ऑफ इम्प्लिकेशन हम देखिए स्टबल बर्निंग आसला दीज आर द इक्वल फॉरेस्ट एरिया कमी गले है ना ता द्वारा हीट बढ़िबो धीरे धीरे हीट वेव्स बढ़ुची तो ये सब इम्प्लिकेशन तमे एनवायरमेंटल इम्प्लिकेशन लिखिला होप यू आर गेटिंग मी दीज आर द आउ गोटे सब ड्रॉट एरिया बढ़ी बढ़ी जाउची कोन पे मु तुमको कहली कि ड्रॉट एरिया बढ़िबार कारण तेणु पंजाब हरियाणा रे ड्रॉट होची कल डेजर्टिफिकेशन तो एथि पे डेजर्टिफिकेशन होची आउ गोटे रीजन होची कोन salinity of the soil is increasing ओके salinity बढ़ी बढ़ी जाउची बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन कहले वाटर लगिंग कंडीशन इंदिरा गांधी केनाल पढ़ेले भी कहितली वाटर लगिंग ए वाटर लगिंग कंडीशन हेले तमरो salinity will increase ये भी गोटे प्रॉब्लम and that is also because of the green revolution and unrestricted or I would say unregulated way रे लोक मान यूज करके खत्म करूछंती एनवायरनमेंट को hope now you are ready to discuss the impact of green revolution on the environment front हाँ कि नहीं आउ गोटे जिनस तुम देखिबो कि जो हमर अर्थवर्म थिला कि बटरफ्लाई थिला बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गला जो नेचुरल पॉलिनेटर थिले से माने खत्म हो गले बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड बुझ परछनी जो हमारे गुड वीड से माने खत्म हो गले गुड पेस्ट जो माने से माने खत्म जो माने पॉलिनेटर्स माने खत्म हो गला तो एबे हमें पॉलिनेशन पई भी हमें अधिक माने प्रॉब्लम गोटे होची पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन कमी गले ओवरऑल प्रोडक्शन भी कमी तो नंबर ऑफ वे यू कैन कनेक्ट टू द एनवायरनमेंट यदि तुम चाहिबो ओके तो बस ये रहबो एनवायरमेंटल मु इकोनॉमिक को आसबी केना तमर बोथ अछि इकोनॉमिक आउ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक रे कोन लिखिबी मु जेमति कहली मु पंजाब हरियाणा कथा कहली लेट्स से पंजाब हरियाणा रो फार्मर ए माने होचंती टॉप 3 रे आसंती है ना इन टर्म्स ऑफ द पर कैपिटल इनकम एठी इंफ्रास्ट्रक्चर भलो द फार्मर्स आर वेल्दी फार्मर्स they are having good roads they are more per capital production भी अधिक तो ये माने पोवर्टी नहीं पंजाब हरियाणा रे पोवर्टी नहीं बस एगुडा ही लिखबे इकोनॉमिक है ना देन जीडीपी रो शेयर बढ़ी गेला पर कैपिटल इनकम बढ़ी गेला फूड अवेलेबिलिटी बढ़ी गेला देश रे बस दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन देन तमर असला ग्रीन रेवोल्यूशन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ईस्टर्न पार्ट रे ग्रीन रेवोल्यूशन आसला तापरे जोटा कि हमें देखिबा है ना एथरे that is the what आमको कहैतला begging ball to the food grain हमर जो green revolution that turn India from a begging ball to the leading producer of the food grain already मु कहिची जबकि तमरो प्रधानमंत्री बा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अछि है ना धीरे धीरे हमें बेंगल को आसला ना बेंगल देख 2010-11 बजेट रे ग्रीन रेवोल्यूशन रो सेकंड फेज हमें स्टार्ट कलु कोठी छत्तीसगढ़ बिहार असम ओडिशा झारखंड ये रीजन रे चलला है ना पूर्वांचल रे हमें स्टार्ट कलु सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओके सेथि पई बेंगल होची नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ राइस बेंगल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन तो धीरे धीरे हमें 2000 मतलब जदि हमें देखिबा कि 10-11 ठू ईस्टर्न सेक्शन को हमें ध्यान दौचे है ना ग्रीन रेवोल्यूशन इज नाउ इट इज अप्लाइड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नाउ ईस्टर्न इंडिया आल्सो ओडिशा इमर्ज करूची बेंगल देखे इमर्ज करूची तो ये रहबो तमर